गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है GS-LV-MK3। साइंस एंड टेक के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इसरो ने रिसेंटली GS-LV-MK3 या फिर जिसको हम LV-M3 भी कहते हैं, उसने 36 सैटेलाइट्स ऑफ भारती जो है आपकी कंपनी, उसके द्वारा बैक्ड वन वेब की 36 सैटेलाइट्स जो हैं वो लो अर्थ ऑर्बिट कॉन्स्टलेशन में जो है वो प्लेस कर दी हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV है क्या। पहले तो ये 3 स्टेज स्पेस लॉन्च व्हीकल है, जो कि जिसमें 3 स्टेजेस होती हैं। पहली आपकी सॉलिड स्टेज, सेकंड स्टेज में लिक्विड स्टेज होती है जो कि आपका विकास इंजन जो है वो पावर करता है। थर्ड स्टेज जो होती है वो क्रायोजेनिक इंजन होती है, जिसमें लिक्विफाइड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एज फ्यूल यूज़ किए जाते हैं। GSLV के पास ही कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो हैवियर पेलोड को जो है वो आपके ऑर्बिट में प्लेस कर सके एज़ कम्पेयर टू PSLV। तो आपकी छोटी जो सैटेलाइट्स होती है ना, जैसे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, इनको जो है प्लेस करने के लिए बनाया गया है। लेकिन GSLV जो बड़ी आपकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं, उनको प्लेस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो जो हायर एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, वहाँ पर प्लेस करने के लिए GSLV का यूज़ किया जाता है। अब GSLV-MK3 क्या है? इसको 2002 में अप्रूव कर दिया गया था इस प्रोजेक्ट को। इसका ग्रॉस लिफ्ट ऑफ वेट लगभग 640 टन है। 3 स्टेज व्हीकल है, जैसे हमने पहले देखा। इसकी पहली जो फ्लाइट हुई थी वो चंद्रयान 2 की जो फ्लाइट थी 2019 में, वो चंद्रयान 2 इसी के थ्रू ही भेजा गया था। अब LV-M3 मिशन है क्या? NSIL जो कि एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की, और कमर्शियल आर्म है इसरो की। उन्होंने 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे मैसर्स वन वेब UK के साथ, जो कि एक भारतीय ग्रुप बैक्ड कंपनी है, ताकि वो 36 सैटेलाइट्स भेज सके, 36 कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेज सके, ताकि गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस, कम्युनिटीज़ जो हैं वो कनेक्टिविटी उनको मिल सके। ठीक है, तो ये सेकंड जो है वो आपका कमर्शियल लॉन्च हुआ है आपके वन वेब के बेस के जो है बिहाफ पर, और लगभग 1,000 करोड़ रुपए इससे इसरो ने कमाया है। और अगर हम ओवरऑल देखें तो GSLV-MK3 की ये थर्ड ऑपरेशनल फ़्लाइट रही है। जो सबसे पहली फ़्लाइट हमने देखा था चंद्रयान 2 की थी। सेकंड जो थी वो यही आपकी वन वेब की ही जो सेकंड फ़्लाइट थी। अब ये थर्ड फ़्लाइट हुई है। ठीक है, इसरो जो है फ्यूचर में PSLV कमर्शियल मिशन भी भेजना चाह रहा है, और LV-M3 मिशन से उनको जो ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि वो गगनयान मिशन भी जो है वो इसी LV-M3 या जिसको आप GSLV-MK3 कह रहे हो, उससे ही भेज सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो UK बेस्ड एक स्टार्टअप है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक ऐसा फॉर्म ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप की है, जिससे स्टेट ऑफ प्लास्टिक को हम बायोडिग्रेडेबल बना सकते हैं। तो ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है बेसिकली यही है कि प्लास्टिक को आप बायोडिग्रेडेबल कैसे बना सकते हो, प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट को डाइजेस्ट नेचुरली करना विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, ये टेक्नोलॉजी इस पर काम कर रही है। ठीक है, तो अब ये प्रोसेस होता क्या है? तो इससे जो है, पहले तो बात तो प्लास्टिक इससे ही बनाए जाएंगे इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए। तो उनको एक प्री प्रोग्राम टाइम दे दिया जाएगा कि मतलब समझ लो ये 10 साल के लिए जो है प्लास्टिक रहेगा। जब तक वो 10 साल है तब तक ये बिल्कुल दिखेगा भी, फंक्शन भी कन्वेंशनल प्लास्टिक की तरह करेगा। लेकिन जब 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो इसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जब ये एक्सपोज रहेगा, तो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्शन शुरू कर देगा, बायो ट्रांसफॉर्म कर लेगा खुद को बायो अवेलेबल वैक्स में। फिर ये वैक्स जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम करना शुरू करेंगे, क्योंकि जो है इसके ये टेक्नोलॉजी क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस रीजन जो है इस पॉलीमर स्ट्रक्चर का, उसको टारगेट करती है। धीरे धीरे जो है फिर वो वेस्ट जो है वो आपके वाटर, CO2 और बायोमास में कन्वर्ट होना शुरू होगा। ये वैक्स लाइक मटेरियल जो है वो नो लॉन्गर प्लास्टिक रह जाएगा और हार्मफुल भी नहीं रहेगा एनवायरनमेंट को। तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हमको प्लास्टिक को जनरेट करना चाहिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं विभूति भूषण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भी एनवायरनमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। लगभग 90 स्पॉटेड डियर जो हैं वो सुंदरबन टाइगर रिजर्व में लाए गए हैं फ्रॉम विभूति भूषण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्योंकि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट जो है वो डीकंजेस्ट करना चाहती है स्मॉल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को। तो विभूति भूषण जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये परमादन फॉरेस्ट जिसको हम कहते हैं, वो एक एनिमल सेंचुरी है नॉर्थ 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट बंगाल के रिवर इच्छामती के जो है बैंक्स पर ये सिचुएटेड है। सुंदरबन तो आपको पता ही है,
डेल्टा ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर्स पर है। 1973 में इसको एक टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर कर दिया गया था। पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा है, लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है। मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और टाइडल फॉरेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। रॉयल बंगाल टाइगर का होम है। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो आपका 1973 में लॉन्च किया गया था। एक वायबल पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर्स उनके नेचुरल हैबिटेट में देने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डीएनए प्रोफाइलिंग ऑफ एलिफेंट्स। ये टॉपिक भी आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिकॉज 30 ईयर्स हो चुके हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट को, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो कह रहे हैं कि हमने डीएनए प्रोफाइलिंग 270 एलिफेंट्स आउट ऑफ लगभग 2675 कैप्टिव एलिफेंट्स जो है वो हमने कंप्लीट कर ली हैं। ये प्रोजेक्ट अगस्त 2022 में स्टार्ट हुआ था। गज सूचना मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ करते हुए फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ये जो है डीएनए प्रोफाइलिंग कर रहे हैं। अब प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है? एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम 1992 में लॉन्च की गई। फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट दिया जाता है वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एफर्ट्स के लिए, और फ्री रेंजिंग पॉपुलेशंस ऑफ वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स को जो है वो प्रिजर्व करने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। लगभग 16 स्टेट्स में ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। आईयूसीएन स्टेटस अगर हम देखें एशियन एलिफेंट का तो वो एंडेंजर्ड है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रॉड टैप स्कीम। ये भी आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रॉड टैप स्कीम के बेनिफिट्स हैं वो 18 आइटम्स ऑफ टेक्सटाइल सेक्टर को भी एक्सटेंड कर दिए हैं। तो ये रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट स्कीम है क्या? इसमें बेसिकली जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको जो भी एक्सपोर्ट वो करेंगे उनको सेंट्रल स्टेट और लोकल ड्यूटीज़ जो उन्होंने भी पे की हैं या टैक्सेस पे किए हैं वो उनको रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। और जो जनवरी 2021 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। और इसमें जो है रिबेट जो है वो क्लेम करनी पड़ेगी एज परसेंटेज ऑफ फ्रेट ऑन बोर्ड वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स। देखते हैं हम फ्रेट ऑन बोर्ड भी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट भी क्या होता है। तो फ्रेट ऑन बोर्ड जो होता है बेसिकली वो ये टर्म होती है, इसका मतलब होता है कि जितने गुड्स जो हैं वो सप्लाई किए जा रहे हैं कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उसकी डैमेज के लिए या उसके डिस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, अगर वो शिपिंग के टाइम पर डिस्ट्रॉय हो गए तो बेसिकली उससे आपके वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट पता लगती है ना ओरिजिनल, क्योंकि आप उसी लेवल के इंश्योरेंस लोगे तो उससे ही आपकी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स पता लगेगी। तो उसी को साथ ही इसको कनेक्ट किया गया है रॉड टैप स्कीम को, ताकि उसी के ही बेसिस पर जो है वो रिबेट क्लेम की जा सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है उन्होंने कहा है कि 15 लाख रुपए पर वन धन विकास केंद्र जो है वो प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना के अंदर हम अभी तक दे चुके हैं। तो ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और ट्राइफेड का। 2018 में इसको लॉन्च किया गया था टू इम्प्रूव ट्राइबल इनकम्स। इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा, और ट्राइफेड इसकी एक नोडल एजेंसी है जो नेशनल लेवल पर काम कर रही है। स्टेट लेवल पर अगर हम देखें तो स्टेट नोडल एजेंसीज जो हैं आपकी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से रिलेटेड वो, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो हैं वो इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहे हैं। जो केंद्र हैं वो एक मैनेजिंग कमेटी द्वारा जो है वो मैनेज किए जाते हैं, और इसमें वन धन जो एसएचजी ग्रुप्स हैं उनके भी मेंबर्स होते हैं। तो लगभग 10 ट्राइबल वन धन विकास सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो एक टिपिकल वन धन विकास केंद्र में को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और इससे लगभग 25 लाख ट्राइबल गैदरर्स को लाइवलीहुड एनहांस अपॉर्चुनिटीज़ देने का जो है वो मोटिव रखा गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वाटर एंड हेरिटेज शील्ड अवार्ड। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सिपापू एक एरिया है एरिजोना में यूएस में जो कि सेक्रेड है होपी नेटिव अमेरिकन नेशन को। उनको जो है वो वाटर एंड हेरिटेज शील्ड जो है डिक्लेयर किया गया है बाय इंटरनेशनल कमेटी ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। तो पर्पस जो है वो इस शील्ड को देने का वो ये है कि पब्लिक को अवेयर कराया जा सके वाटर एंड इंडिजिनस सेक्रेड साइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड के बारे में। सिपापू एक रॉकी डोम है जो कि लाइमस्टोन से बनाया गया है लिटिल कोलोराडो रिवर के पास। लिटिल कोलोराडो जो है वो मेन स्टेम ऑफ द रिवर जो है उसको ज्वाइन करती है, और ग्रैंड विद इन द ग्रैंड कैनियन ही उसको ज्वाइन करती है, जो कि इटसेल्फ एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो लिटिल कोलोराडो जो है जो उसका खासकर जो कॉन्फ्लुएंस है कोलोराडो के रिवर के साथ वो सेक्रेड है होपी कम्युनिटी के लिए ही नहीं बल्कि बाकी नेटिव अमेरिकन ग्रुप्स जो हैं जैसे कि नवाजो और जूनी उनके लिए भी।
तो इंटरनेशनल कमेटी ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स क्या है? एक ग्लोबल एनजीओ है जो कि यूनेस्को से एसोसिएटेड है। ये एक एडवाइजरी बॉडी है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन ऑफ यूनेस्को को भी इम्प्लीमेंट करती है। ये जो रिव्यूज़ जो जो नॉमिनेशंस होते हैं कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज के, उनको भी रिव्यू करती है। होपी ट्राइबल पीपल कौन है? वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग कल्चर्स को बिलोंग करने वाले लोग हैं। ये नॉर्थ टू एरिजोना में जो है माइग्रेट हुए थे 12th सेंचुरी में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बार्क B1201। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ने एक बॉक्साइट सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल बनाया है, बार्क B1201, इन कोलैबोरेशन विद भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो बेसिकली जो अभी बॉक्साइट को जो है इंपोर्ट करना पड़ता है बॉक्साइट के इस पर्टिकुलर मटेरियल को, उसको हम उसको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए हमने जो है इंडस्ट्रीज़ के लिए ये मटेरियल बनाया है। और ये बॉक्साइट होता क्या है? बेसिकली बॉक्साइट आपका एक इम्पॉर्टेंट ओर है जिसका आप यूज़ करके एल्यूमिनियम बनाते हो। तो बहुत जो डिपॉजिट्स ऑफ बॉक्साइट हैं वो लेटराइट्स में आपको देखने को मिलेंगे। हिल्स और प्लेट्यूज़ पे खासकर ये आपके कंसनट्रेटेड हैं। और इसको जो है यूज़ करते हुए एल्यूमिना बनाया जाता है बेयर प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए। अगर हम देखें तो ओडिशा अकेला ही जो है 53% ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज ऑफ बॉक्साइट जो है वो रखता है। ठीक है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is GSLV MK3. This topic is important for your science and tech section. So ISRO has recently successfully launched the GSLV MK3, or it is also called the LVM3, and put 36 satellites of Bharti-backed OneWeb into the space. So you know that geosynchronous satellite launch vehicle is a three-stage space launch vehicle which is designed, developed and operated by the ISRO, and it is meant to launch satellites and other space objects into the geosynchronous transfer orbits, which is about 37,000 kilometers from the Earth. So the first stage is of course solid stage, and it generates the maximum thrust. Second stage is the liquid rocket engine, which is of course also known as the Vikas engine. The third engine is a cryogenic engine, which uses liquefied oxygen and hydrogen as fuel. And GSLV has the capacity to put heavier payload into the space, whereas PSLV is only delivering Earth observation or remote sensing satellites. GSLV is designed to launch communication satellites, which have to be delivered at the higher elliptical orbit. So what is GSLV Mk3? This project was improved in 2002, and it has a gross lift-off weight of about 640 tons, and it's of course a three-stage vehicle. And the first flight of GSLV Mk3 was Chandrayaan-2 spacecraft, which was put into the orbit in 2019. So then what exactly is this LVM3 mission? So NSIL, which is a public sector enterprise under the Department of Space and also the commercial arm of ISRO, it had signed two launch service contracts with Messrs OneWeb. We know that one launch was already done last year, and this is the second launch for the OneWeb, and now 36 communication satellites have been put into the space. So this is the second dedicated commercial launch of LVM3, and both have been basically for the OneWeb company. So if we look at it, then this is the third operational flight of GSLV Mk3. Of course, it is the first one was the launch of Chandrayaan-2. Now this will pave the way for India to move towards benefiting from remarkable capabilities of low Earth orbit connectivity. So is looking forward to a PSLV commercial mission also, whereby the Nisar will also be launched, and we have already discussed about Nisar, and LVM3 mission has also given ISRO more confidence about this rocket because it will also be used for Gaganyaan mission. So the next topic is biotransformation technology. This topic is important for your science and tech and environment sections both. A UK-based startup has claimed that they have developed a certain biotransformation technology which can alter the state of plastics and make them biodegradable. So this would digest the plastic packaging waste naturally with the help of microbes, and it will ensure that plastic which escaped otherwise to the
and it is fully biodegraded with no scope of microplastics left behind. So how this process would work? So plastics which will be used making this technology will be given a program time. So let's suppose that this plastic is being produced and it is being given a time that after 10 years it will turn into it will turn biodegradable. So after the expiry of this 10-year term and exposure to the external environment, this plastic would start self-destructing. Remember that during this period of its functioning, it will behave and it will look like conventional plastics. But after the expiry of this term, it will self-destruct and it will biotransform itself into a bioavailable wax. So this wax will then be consumed by microorganisms and it will convert into water, carbon dioxide and biomass. So this wax-like material is no longer plastic and it will no longer be harmful to the environment. So the next topic is Bibhuti Bhushan Wildlife Sanctuary. This topic is again important for your environment section. Recently, as many as 90 spotted deer have been brought to Sundarban Tiger Reserve from the Bibhuti Bhushan Wildlife Sanctuary because West Bengal State Forest Department wants to decongest smaller wildlife sanctuaries. So, what is Bibhuti Bhushan Wildlife Sanctuary? It is also known as Parmadan Forest. It is an animal sanctuary in the North 24 Parganas district of West Bengal. It is situated on the banks of river Ichamati. So we already know that Sundarban Tiger Reserve is located on the delta of Ganga, Brahmaputra and Meghna rivers in Bay of Bengal. It was declared a tiger reserve in 1973 as under the Project Tiger. It is part of the world's largest delta and it is also home to the largest mangrove forests. So it's the vegetation in this area is moist tropical forests and tidal forests. So Project Forest, we know that it's a tiger conservation program which was launched in 1973 from Jim Corbett. And the aim of this program was to ensure a viable population of Bengal tigers in their natural habitats. So the next topic is DNA profiling of elephants. This topic is again important for your environment section. So announcing a 30-year celebration of Project Elephant, Ministry of Environment has also said that DNA profiling of 270 of the 2675 captive elephants in the country have been completed. The project started in August 2022 using the Gaj Sujna mobile application by forest officials. So in this DNA profiling, it is basically a process in which a specific DNA pattern called a profile is obtained from a sample of the bodily tissues of the elephants. So what is Project Elephant? It's a centrally sponsored scheme to protect elephants and to improve their habitat and corridors. And under this project, financial and technical support is given to wildlife management efforts, and it is given to ensure that there is free-ranging population of wild Asian elephants. This is being implemented in 16 states. If we look at the conservation status of Asian elephant, then they are endangered. So the next topic is Rod Tap scheme. This topic is important for your economy section. Recently, central government has extended export benefits under the Rod Tap scheme to 18 items which are related to the textile sector. So what is this remission of duties and taxes on exported product scheme? So basically this scheme would refund to exporters the central, state, local duties or taxes which they have so far not been rebated or refunded. So this scheme was launched in January 2021 as a replacement of merchandise export from India scheme. So basically how this amount would be arrived. So it would be a percentage of the freight on board value of exports. So why freight on board value of exports has been chosen? Because that would be the most authentic value of the goods that upon which the rebate or the refund of the taxes are being sought. Why? Because let's see that freight on board is basically the term which is used to indicate who is liable for the goods which will be damaged during shipping. So this is used for insurance purposes. So this is the correct amount which is being exported. So that's why this particular freight on board amount is being used to for the for the exporters to be claimed a refund, so that there is no leakage in this or there is no corruption in this entire scheme. Okay, so the next topic is Pradhan Mantri Van Dhan Vikas Yojana. This topic is important for your social issues.
So recently, Union Minister of Tribal Affairs has said that 15 lakh rupees per Van Dhan Vikas Kendra have been given under the Pradhan Mantri Van Dhan Vikas Yojana, which is an initiative of Ministry of Tribal Affairs and TriFed. It was launched in 14th, launched in April 2018 to improve tribal incomes through value addition of tribal products. It is implemented through the Ministry of Tribal Affairs as nodal department at the central level and TriFed at the national level. So at the state level, state nodal agencies for minor forest produce and district collectors are playing a pivotal role in the implementation of this scheme at the grassroots level. Kendras are proposed to be managed by a managing committee which will have representatives of Bandhan SHGs. So almost if we look at a single Dhan Vikas Kendra, they constitute about 10 such tribal Dhan Vikas self-help groups, each comprising of up to 30 minor forest produce gatherers or tribal handicraft artisans, which comes out to be about 300 beneficiaries per Kendra. So the initiative aims to enhance livelihood to about 25 lakh tribal gatherers in the country. So the next topic is Water and Heritage Shield Award. This topic is important for your international relations. So Sipapu is an area located in Arizona, USA, and it is sacred to the Hopi Native American nation. It has been awarded a Water and Heritage Shield by the International Committee on Monuments and Sites. So the purpose of this shield is to help the public become aware of water and indigenous sacred sites. Sipapu is basically a rocky dome which is made of limestone, and it is located on the Little Colorado River. So Little Colorado River joins the main stem of the river, the Colorado River, within the Grand Canyon, which is itself a UNESCO World Heritage Site. So Little Colorado, basically the confluence, the where the it meets the Colorado River, is sacred not just to the Hopi natives but also other Native American groups like Navajo and Zuni. So what is International Committee on Monuments and Sites? So it's a global NGO which is associated with UNESCO, and it's an advisory body of the World Heritage Committee. It reviews the nominations of cultural world heritage, and it ensures the conservation status of properties. So what are Hopi tribal people? They are one of the oldest living cultures in documented history. They have migrated north to Arizona in 12th century. So the next topic is BARC B1201. This topic is important for your economy section. So recently, National Aluminium Company Limited, which is Navratna CPSC, the Central Public Sector Enterprise, it has successfully developed a bauxite certified reference material, which has been named as BARC B1201 in collaboration with Bhabha Atomic Research Center. It is the first of its kind certified reference material in India and fifth in the world. This will act as an import substitution, which is being otherwise used by our industries. So what is bauxite? Bauxite is an important ore which is used for making aluminium. The deposits of bauxite are mainly associated with laterites, and generally they occur on hills and plateaus. Bauxite is primarily used to produce alumina through the Bayer process, and Odisha alone accounts for 53% of country's resources of bauxite. Apart from that, states like Andhra Pradesh, Jharkhand, Madhya Pradesh, and Maharashtra also have bauxite deposits. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.